হিন্দি বাংলা মিক্স করে বললে কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে okay. In previous class we had discussed about first born approximations for calculation of scattering amplitude. Okay, so amplitude of the scattering amplitude after apply the first born approximations is nothing but f of theta phi, it's equals to minus 2m h cut square k integrations 0 to infinity r sin kr v of r dr. ओके, सो जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का जो एक्सप्रेशंस था बेसिकली दिस इज द एक्सप्रेशंस, और इस एक्सप्रेशंस को यूज करके हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम भी किया था। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें जो k था, k इज नथिंग बट प्रोपागेशन वेक्टर, और उसको हम लोग एक सिंप्लीफाइड और एक जनरल फॉर्मूला जो था k को हम लोग बेसिकली q से डिनोट किया था, और जो q था q is nothing but 2k sin by 2. ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन बेसिकली 2k sin थीटा by 2 था, और थीटा इज नथिंग बट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस, स्कैटरिंग एंगल, दिस इज द स्कैटरिंग एंगल। यह तक हम लोगों ने बेसिकली इसको स्टडी किया था, और इसमें जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया। बट आज का क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज द पार्शियल वेव एनालिसिस। सो पार्शियल वेव एनालिसिस डिस्कशन करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हम लोग लेने वाले हैं, जो फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशंस और पार्शियल वेव एनालिसिस दोनों कंसेप्ट के बीच के एक डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जो फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन था, इस फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में एक कंडीशंस क्या था, एक टारगेट सेंटर था दैट इज बेसिकली स्कैटरिंग सेंटर। उस टारगेट सेंटर में एक पार्टिकल बेसिकली इंसिडेंट हो रहा था। ठीक है, एक टारगेट सेंटर, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग सेंटर। स्कैटरिंग सेंटर में एक पार्टिकल और प्लेन वेव बेसिकली इंसिडेंट हो रहा था, और इसमें जो इंसिडेंट पार्टिकल का जो एनर्जी था दैट इज नथिंग बट ई, और स्कैटरिंग पोटेंशियल का जो पोटेंशियल था दैट इज रिप्रेजेंटेड एज v of r। और इसमें एक बेसिक जो कंडीशन था दैट इज इंसिडेंट पार्टिकल का जो एनर्जी दैट इज लार्ज कंपेयर टू पोटेंशियल ऑफ स्कैटरिंग सेंटर। दिस इज द conditions to apply first born approximations. Okay, next to apply partial wave analysis, what is the conditions for what we can apply partial wave analysis? Okay, so for apply partial wave analysis there have been no limitations of potential and energy। माने एखाने यहाँ पे देखिए एनर्जी एंड पोटेंशियल के बीच कोई रिलेशंस नहीं है ऐसा, जो एक पार्टिकल का एनर्जी ई पोटेंशियल से ज्यादा होने वाले हैं और इससे कम होने वाले हैं, और एनर्जी पोटेंशियल से इक्वल होगा, इस तरह का कोई कंडीशंस और लिमिटेशंस यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है। सो इन दिस सेक्शंस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शंस विदाउट प्लेसिंग एनी लिमिटेशंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ v of r. Okay, so in first born approximations we already apply a limitations that energy is greater than compared to potential energy v of r, but in partial wave analysis we also calculate the scattering cross sections, amplitude of scattering cross sections without placing any limitations on the strength of v of r. Okay, so heading डालिए partial wave analysis, partial wave analysis। Partial wave analysis. So using this partial wave analysis we can also calculate the scattering amplitude as like first born approximations. Okay, first born approximations को यूज करके जिस तरह हम लोग स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डिफाइन किए थे, इसी तरह
पार्शियल वेव एनालिसिस का कंसेप्ट यूज करके हम लोग स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बेसिकली डिफाइन करने वाले हैं। तो इस सेक्शन में हम लोग फिर से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, बट विदाउट एनी लिमिटेशंस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ V of R. Okay, so using partial wave analysis, what is the aim? एम क्या है बेसिकली, क्या हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करने वाले हैं? यूजिंग पार्शियल वेव एनालिसिस, using partial wave analysis, we are calculate using partial wave analysis we are calculate scattering amplitude, or scattering amplitude, it means the scattering amplitude related with differential cross section, also total cross sections. So basically we are basically calculate cross sections, total cross sections, all are directly proportional to scattering amplitude square. Basically d sigma upon d omega, this is the differential cross sections, is proportional to f of theta phi mod square. Also sigma t is directly proportional to f of theta phi mod square. So if we calculate the scattering amplitude, we are already defined the differential cross sections as well as total scattering cross sections. So basically we are calculate scattering amplitude, it means differential cross sections and also total scattering cross sections. Okay, this is our main motive. So okay, using partial wave analysis we are calculate cross sections, the cross sections. Cross sections without placing any limitations, on the strength of V of R, on the strength of V of R. Remember this concept, most remember. So इसमें V of R का हम लोग कुछ भी लिमिटेशंस अप्लाई करने वाले हैं, हम लोग कुछ भी कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाले हैं फॉर द पोटेंशियल के रिगार्डिंग. ओके, सो इसमें भी इस केस को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए भी डिस्कस करने वाले हैं. जिस तरह हम लोग फर्स्ट लेक्चर से बॉर्न अप्रोक्सीमेशन तक हम लोग इलास्टिक स्कैटरिंग को एज्यूम किए और कैलकुलेशंस को बेसिकली आगे लेके गया, इसी तरह इसी आज का केस में हम लोग जो स्कैटरिंग डिस्कस करने वाले, दिस इज इलास्टिक स्कैटरिंग. दैट मींस इंसिडेंट वेव का प्रोपगेशन मोमेंटम, इंसिडेंट वेव का मोमेंटम और स्कैटरिंग वेव का मोमेंटम इसमें इक्वल होने वाले. दैट मींस wave vectors are equal of incident wave vector and scattering wave vectors, all are equal. Using this concept we also discuss partial wave analysis for elastic scattering. Take a heading, partial wave analysis for elastic scattering. Very important. Partial wave analysis for elastic scattering. Okay, elastic scattering. For elastic scattering. Partial wave analysis for elastic scattering. Elastic scattering means momentums are conserved. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम इससे पार्शियल वेव एनालिसिस फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम we take some assumptions regarding potential. Okay, we take some assumptions regarding potential. assumption क्या है? जो पोटेंशियल हम लोग लेने वाले हैं दैट इज मस्ट बी स्फेरिकली सिमेट्रिक.
must be spherically symmetric. But this is the फर्स्ट बॉन्ड अप्रोक्सिमेशन में क्या था, एक पर्टिकुलर एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिस्कशंस किया, उसके बाद उस पोटेंशियल को हम लोग स्पेसिफाई किया इन स्फेरिकली सिमेट्रिक केस। बट इसमें फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट स्टेप होगा ना पोटेंशियल का, जनरल नहीं होगा, वो स्पेसिफाइड है, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। दिस इज द फर्स्ट assumptions टू डिस्कस पार्शियल वेव एनालिसिस। पार्शियल वेव एनालिसिस को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक के assumptions और स्पेसिफाई द पोटेंशियल नेचर ऑफ द पोटेंशियल दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। जो पोटेंशियल हम लोग लेने वाले हैं और जो पोटेंशियल के लिए हम लोग स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस कैलकुलेट करने वाले, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई होगा। क्लियर? Is it clear? So we assume the potential must be spherically symmetric. So what is the meaning of spherically symmetric? First of all, we have discussed what is the meaning of spherically symmetric और spherically symmetric के साथ और कौन सा कॉन्सेप्ट इसके साथ बेसिकली कनेक्ट है, हर एक कंसेप्ट को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे, देन वी गो फॉर, हम लोग आगे बढ़ने वाले इस कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, सो वी assume here the potential to be spherically symmetric. So we assume here the potential to be spherically symmetric, okay, remember spherically symmetric, we assume the potential to be spherically symmetric. So spherically symmetric means, what is the meaning of spherically symmetric? Spherically symmetric potential के साथ और कौन सा कॉन्सेप्ट इसके साथ बेसिकली रिलेट है और कनेक्ट है? इसका मतलब पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक मींस जो पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा था उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना? एज वी नो फॉर कूलम पोटेंशियल ऑलवेज एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, है ना? So Coulomb potential is also an example where the potential must be spherically symmetric potential. Or hydrogen atom case, that case also potential is spherically symmetric potential, and here also the momentum is conserved. So using this concept, we can easily assume as the potential is spherically symmetric, then the angular momentum of the incident particle must be conserved. Okay, so what happened? We assume for the potential to be spherically symmetric, the angular momentum of the incident particle okay, will therefore conserved. Therefore be conserved. Okay, will therefore be conserved. ठीक है, so ये पार्टिकल बेसिकली जो पार्टिकल एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का स्कैटरिंग बेसिकली हो रहा है फ्रॉम सेंट्रल पोटेंशियल। स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल मींस सेंट्रल पोटेंशियल। सो ए पार्टिकल scattered from a central potential will have a same angular momentum after scattering.
ओके, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, इट्स मींस एक पार्टिकल इंसिडेंट हुआ एक सेंट्रल पोटेंशियल के ऊपर, देन इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम और स्कैटरिंग पार्टिकल का मोमेंटम इसमें कंजर्व होने वाले हैं। कोलिशंस के पहले, कोलिशंस के बाद जो मोमेंटम होगा दैट विल बी कंजर्व्ड। दैट इज द मेन फंडा, मेन फंडा। इसको यूज करके हम लोग एक बड़ा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम लोग देखने वाले नहीं है, उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम लोग बेसिकली एनालाइज करेंगे अच्छे से, जिसमें बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं और पूछते हैं लोग, है ना। सो एक बहुत अच्छा नोट लिखिए, एक अच्छा नोट, इस नोट को यूज करके हम लोग एक डेरिवेशन से डिराइव करने वाले हैं। देखिए, ए पार्टिकल, ए पार्टिकल, ए पार्टिकल scattering from a central potential, scattering scattering from a central potential from a central potential will have the same angular momentum, same angular momentum, momentum before and after collisions or scattering, before and after scattering or collision. Okay, scattering or collisions. Okay, remember. So as you know, the incident particle wave is plane wave. Incident particle का जो wave था, that is looks like a plane wave. So let us consider this plane wave is incident in the direction, in the z direction. So एक assumption लेते हैं, जो फर्स्ट लेक्चर था ना, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे बेसिकली जो इंसिडेंट वेव था दैट इज नथिंग बट ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर आई के आर। इंसिडेंट वेव का प्लेन वेव था और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था दैट इज नथिंग बट ई टू दी पावर आई के आर। सो हम लोग आई के आर, यस आई के आर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किया, एक डायरेक्शन फिक्स किया। और इसका मतलब क्या हुआ था, डायरेक्शन फिक्स किया मतलब हम लोगों ने एक टारगेट सेंटर लिया और जो इंसिडेंट प्लेन वेव था ना, इंसिडेंट प्लेन वेव बेसिकली इंसिडेंट हो रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ टारगेट सेंटर। इस डायरेक्शन को हम लोग जेड डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम लोग जेड डायरेक्शन मान लेते हैं। तो इसको अगर इन प्लेन वेव इंसिडेंट इन द जेड डायरेक्शंस, जेड डायरेक्शंस, ओके, सो देन द जो इंसिडेंट वेव था, इंसिडेंट वेव था, इस इंसिडेंट वेव का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। और उस इंसिडेंट वेव को हम लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम दैट मीन्स हम लोग एक एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यूज करने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर स्मॉल एल यूज करने वाले हैं। सो जो इंसिडेंट वेव ई टू दी पावर आई के डॉट आर, आई के डॉट आर, आई के डॉट आर, इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। व्हाई एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखिए, को समझ आएगा धीरे धीरे।
सो लेट्स टेक एजम्पशंस। हम लोग इस बार पार्शियल वेव एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं। जो जो एजम्पशन था उस एजम्पशन के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट मिलने वाला था हम लोग को मिला। मोमेंटम ऑफ कॉन्जर्व, इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम, स्कैटरिंग पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व कंजर्व हो रहा है बेसिकली। इसी को यूज करके हम लोग एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव देखने वाले हैं। जो पर्सपेक्टिव है, लेट अस कंसीडर द इंसिडेंट प्लेन वेव का जो वेव फंक्शन है दैट इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल e टू द पावर I k डॉट r। ओके, और इंसिडेंट प्रोपगेशन वेक्टर और जो पोजीशंस वेक्टर था उसके बीच का जो एंगल बेसिकली हम लोग ने अज्यूम किया दैट इज थीटा, स्कैटरिंग एंगल। ठीक, सो इंसिडेंट वेव इज नथिंग बट e टू द पावर I k r cos थीटा। ठीक है, e टू द पावर I k r cos थीटा। ओके, इसी को हम लोग देखिए एक फॉर्म देने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्म किस तरह होगा ना, इसको हम लोग लिखने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर स्मॉल एल के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखने वाले हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर स्मॉल एल के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो इंसिडेंट प्लेन वेव कैलकुलेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर। इंसिडेंट प्लेन वेव, इंसिडेंट प्लेन वेव is in the z डायरेक्शन। जो प्लेन वेव इंसिडेंट हो रहा है z डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, इज इन द z डायरेक्शन। दिस इज द assumption, z डायरेक्शन। Hence incident wave psi incident r vector is nothing but exponential I k vector dot r vector। So exponential I k r cos theta। Okay, this is the incident wave, and this wave can be expressed in terms of a superposition of angular momentum eigenstate। So of course we can write it। So it can express in terms of superpositions of angular momentum eigenstate। रिमेंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, जो इंसिडेंट वेव था इस इंसिडेंट वेव को हम लोग एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आइगेनस्टेट। ओके, एंगुलर मोमेंटम आइगेनस्टेट with a definite angular momentum quantum number, with a angular momentum quantum number, angular momentum quantum number L। ओके, हम लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम आइगन स्टेट, और जो आइगन स्टेट होगा उसमें जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है दैट इज स्मॉल एल। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बेसिकली लिखने वाले हैं इस इंसिडेंट वेव का एक्सप्रेशंस को। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट एक्स e to the power I k vector dot r vector, it is equals to e to the power I k r cos theta। So it is nothing but summation over L 0 to infinity I to the power L
2l plus 1, that is jl kr pl cos theta into pl cos theta, legendary polynomial jl kr. E to the power I k dot r equals to e to the power I k r cos theta. It can be expressed as like that. Okay, this is the expressions of incident wave. So now the overall expressions of total wave functions after scattering, overall wave functions of the particle after scattering. Now the overall wave functions of the particle after scattering each psi total equals to psi incident plus psi scattering. Okay, psi incident is nothing but summation over L 0 to infinity I to the power L 2l plus 1 jl kr. jl kr is a Henkel functions. जिस तरह legendary some special functions, Hermite functions, Hermite polynomial, legendary polynomials, Lagrange polynomials, इसी तरह jl is nothing but Henkel functions, Henkel special functions. So psi total equals to summation over L 0 to infinity I to the power L 12 plus 1 jl kr pl cos theta plus f of theta phi e to the power I kr upon r. This is the total wave functions using partial wave analysis. इसके बाद देखिए इसको इस वेव फंक्शंस को श्रोडिंगर इक्वेशंस में अप्लाई करना है. अप्लाई करने के बाद इसमें बहुत बड़ा एक डेरिवेशन है. डेरिवेशंस को करने कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. सो आफ्टर कैलकुलेशंस we get scattering amplitude. Okay, तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा एक कैलकुलेशंस को हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. जो इंसिडेंट प्लेन वेव था उस इंसिडेंट प्लेन वेव में हर एक एल के वैल्यू में आपको क्या मिलने वाला है. ठीक है, इसके लिए ठीक है, हर एक एल के वैल्यू में रेस्पेक्ट में आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है. देखिए यहाँ पे psi incident is nothing but I k dot r. This is the plane wave. This is the plane wave. और इसको हम लोगों ने पार्शियल वेव के रेस्पेक्ट में लिखा L 0 to infinity 12 plus 1 I to the power L JL PL cos theta. यहाँ पे L is nothing but 0 to infinity. Okay, so
For each value of L, there is a partial wave. मतलब L equals to 0, then you get one partial wave. L equals to 1, then you get another partial wave. L equals to 2, then you get another partial wave. So our discussions is only for L equals to 0 and L equals to 1. L equals to 0 and L equals to 1. L equals to 0 represent S wave and L equals to 1 represent P wave. These are very important. L equals to 0 represent S partial wave. L equals to 1 represent P wave. Okay, this L equals to 0 is the angular momentum quantum number 0. That means S wave, or L equals to 1, angular quantum number 1. That means we get P wave. Okay. So each value of L, or each value of L, there is a partial wave. Partial wave. Each value of L, there is a partial wave. L equals to 0, we get S wave. Remember, क्वेश्चन में मिलेगा आपको S wave. S wave. तो S wave means L equals to 0 पुट करना होगा. L equals to 1, that means P wave. Yes, okay. These two parts are involved in this our syllabus. Okay. और क्वेश्चन किसी टू L equals to value L equals to 0, L equals to 1 से कुछ है बेसिकली. So क्वेश्चंस करने के टाइम पता लग जाएगा, कोई बात नहीं. Okay. So this is the concept. For each value of L, we get different kind of partial wave. For L equals to 0, we get S wave. L equals to 1, we get P wave. So now after the calculations, what is the expressions of scattering amplitude? What is the expressions of scattering amplitude? So after calculations, scattering amplitude is f of theta, only theta, not phi, because there are phi term is absent. 1 upon k summation over L 0 to infinity 12 plus 1 e to the power I delta L sin delta L PL cos theta. Delta is nothing but phase shift. Delta is nothing but phase shift. This is called phase shift. Remember these expressions. F of theta after partial wave analysis, it's nothing but 1 upon k L equals to 0 to infinity 2L plus 1 e to the power I delta L sin delta L PL cos theta. L is the angular momentum quantum number and delta is nothing but phase shift and theta is scattering angle. Okay, so please remember L is k is a wave vector of incident wave, vector of incident wave. Okay, L is angular momentum quantum number, angular momentum quantum number, that is L equals to 0 1 2 3 and so on up to infinity. L equals to 0 we get S wave, L equals to 1 is get P wave. It's okay. Another is delta L. Delta L is nothing but is called phase shift. It's called phase shift. This value will be given in the questions. Question में इसका value given होगा. Phase shift.
or theta, scattering angle. Now we can calculate the differential cross sections and total scattering cross sections using these expressions of scattering amplitude. Heading डालिए differential cross sections. Differential cross sections. Okay, a differential cross section. Differential cross section, this means d sigma upon d omega mod f of theta mod square. F of theta mod square means basically complex conjugate of f of theta and f of theta, because there is a complex term is present in f of theta form. E to the power I delta L complex term is present. Okay, so now d sigma upon d omega, it is equals 1 upon k summation over 1 upon k square. Okay, two term is f of theta star and f of theta 1 upon k square summation over L equals to 0 to infinity, another summation L prime 0 to infinity. First term is 2L plus 1, another term 2L plus 1. Okay, representations. Another is e to the power I delta L minus delta L prime. Okay, sine delta L prime into PL cos theta, PL prime cos theta. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Hello? Okay, clear. Now we can simplify these expressions. Okay, now we can simplify this expression. So differential cross sections का expression आपको इसी तरह मिला. Next we calculate total scattering cross sections. Okay, total cross sections. Don't worry. Total scattering cross sections is very important in partial wave analysis. Total scattering cross sections. Now total scattering cross sections, sigma is nothing but d sigma upon d omega into d omega. Okay, yeah. So it is nothing but it's equals to basically आपको जो मिलने वाला है that is f of theta mod square and it is sin theta d theta d phi. There is two integrations part. So f of theta square का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड करके रखा है ना. So it is theta is 0 to pi. इसका जो लिमिट है बेसिकली 0 to pi तक है. It's a mod f of theta square is a function of only theta sin theta d theta. Next phi is 0 to 2 pi into d pi. Please check. Be careful. F
in Born approximations, f is a function of theta and phi. But after using the partial wave analysis, f scattering amplitude only depends on theta, scattering angle. After calculations, phi term will be cancelled out. So now f of theta. So second integration 0 to pi 2 pi d phi, it's nothing but 2 pi. So integrations become 2 pi into theta 0 to pi mod f of theta mod square sin theta d theta. Okay, sin theta d theta. Theta d theta. Okay. Now we introduce the value of f of theta square, f of theta mod f of theta square, and then can simplify these expressions. Very easy. So it is equals to 2 pi by k square summation over L0 to infinity summation over L prime 0 to infinity 2L plus 1 2L prime plus 1 e to the power I delta L minus delta L prime sin delta L sin delta L prime. Okay, integrations 0 to pi PL cos theta PL prime cos theta sin theta d theta. PL cos theta PL prime cos theta sin theta d theta. As we know, the relations of legendary polynomial जो स्पेशल फंक्शंस में हम लोगों ने स्टडी किए थे ना, ठीक है, उसको हम लोग यूज करने वाले हैं अच्छे से. थोड़ा सा आज लेजेंडरी पॉलिनोमियल का जो लेक्चर्स हम लोगों ने जो लेक्चर था उस लेक्चर में और जो नोट्स था उस नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए आज एक बार. वहां पे देखिए इस तरह का एक टर्म आया था, शायद याद नहीं है, सो रिकॉल कर लेते हैं. शायद याद नहीं है, रिकॉल कर लेते हैं. सो यूजिंग द रिलेशंस, एक रिलेशंस हम लोगों को मिला लेजेंडरी पॉलिनोमियल में यूजिंग द रिलेशंस 0 to pi PL cos theta PL prime cos theta sin theta d theta. इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड करने वाले है ना. सो लेट अस टेक L और L prime are equal. L और L prime is equal. Take L equals to L prime. So this integration is nothing but 0 to pi PL cos theta mod square sin theta d theta. इसका देखिए वहां पे आपका PLX mod square और x का डेरिवेटिव इसी तरह एक फॉर्म था PLX mod square dx. इसका डेरिवेटिव फॉर्म था यहाँ पे dx, x का डेरिवेटिव था ना. इस तरह का एक्सप्रेशन था कि नहीं, है कि नहीं, वहां पे याद है. इसका पहले बेसिकली क्या था 2 अपॉन 12 प्लस 1 था ना लेजेंडरी पॉलिनोमियल ये था, उसी को हम लोग यूज करने वाले. सो यू यूज यस 2n, आई थिंक 2n minus 1
2n था, वहां पे pn cos pnx, तो इसमें l था, l है, इसीलिए तो यहाँ पे 2/12 + 1 होगा, और कुछ नहीं. So use these expressions, only use these expressions. अच्छे से नोट करिए, रिमेम्बर, एक्सप्रेशंस को याद करिए, रिमेम्बर. और क्या था, और एक इस एक्सप्रेशंस को, दिस इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन और स्पेशल केस, इस एक्सप्रेशंस को हम लोग और भी इलाबोरेट करने वाले हैं, इस एक्सप्रेशंस को. दिस इज यूज आल्सो, दैट इज नथिंग बट pn x pn prime x dx is nothing but 2/2n + 1 delta l n prime. Yes or no? था ना? The delta n prime is 1 when n equals to n prime, and is 0 when n not equals to n prime. So remember these expressions. We use this. We use this. Only use these expressions. Okay. So for now, concentrate जो expressions है यहाँ पे, इस expressions को देखिए, 0 to pi pl cos theta pl prime cos theta का डेरिवेटिव sin theta d theta. That means sin theta d theta. So it is represented as 0 to pi pl cos theta pl prime cos theta मॉड था ना, मॉड होगा, इसलिए छोड़िए. Nothing but 2/12 + 1 delta ll prime. So use this. Okay. So this expressions is nothing but 2/12 + 1 delta l in l prime. So now the become the total scattering cross section is equals to 2 pi upon k square summations over l 0 to infinity summations over l prime 0 to infinity 2l + 1 2l prime + 1 sin delta l prime. It is nothing but 2/12 + 1 into delta l prime. अब देखिए यहाँ पे, अगर if l equals to l prime, then we get value, otherwise it's 0. So integrations, two integrations, single integrations, converted in single integrations. When l equals to l prime, then we get single summations, only single summations. So sigma, it's nothing but 2 pi upon k square summation over l equals to 0 to infinity 2l + 1 whole square sin square delta l into 2l + 1 and 1 into 1. Okay, 2l + 1 or 2l + 1 just cancel out. So now the scattering cross sections sigma is nothing but 4 pi, right? 4 pi upon k square summation over l 0 to infinity 12 + 1 sin square delta. Remember, most of the time questions asked using these expressions. Remember, very, very important. Remember.
This is the expressions of total scattering cross sections. Using partial wave analysis. Any doubt? This is also called partial cross sections. This is also called, that is basically represented as like it, sigma L equals to 4 pi k square summation over L0 to infinity 12 plus 1 sin square delta L. अब देखिए when L equals to 0, this is called partial cross sections. Partial cross sections. Which is called partial cross sections. Corresponding to partial cross sections, लिखिए partial cross sections corresponding to scattering of particles in various angular momentum state. This is the, इसको लिख के रखिए अच्छा होगा. This is called partial cross sections corresponding to the scattering of particle corresponding scattering of a particle in various angular momentum state. Angular momentum state. Okay. क्लियर? इतना तक क्लियर है? हम लोग एक बहुत नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले ऑप्टिकल थ्योरम. ऑप्टिकल थ्योरम के बारे में हम लोग इस बार डिस्कस करेंगे. ऑप्टिकल थ्योरम. ऑप्टिकल थ्योरम हेडिंग डालिए ऑप्टिकल थ्योरम. तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन था. स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, we know scattering amplitude f of theta, it's nothing but 1 upon k summation over L equals to 0 to infinity 12 plus 1 e to the power I delta L sin delta L PL cos theta. Okay. Now when theta equals to 0, what is the meaning of theta? Theta equals to 0 means no scattering. Theta 0 means scattering angle 0, है ना? Scattering angle 0. That means no deflections of the particle, no contribution of scattering. Theta 0 means जो पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा था, इस पार्टिकल without any scattering or without any deflections particle go in the incident directions. So basically यहाँ पे this is the scattering center, एक पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा था और इसका इंसिडेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन था. इसके बाद क्या हुआ, स्कैटरिंग सेंटर से पार्टिकल बेसिकली स्कैटर्ड होके एक्स डायरेक्शन में मूव किया
and then create a scattering angle theta. So when theta equals to 0, that means particle will go in this direction. है ना? Is that theta equals to 0? Particle have no scattering. Theta equals to 0 means particle have no scattering or particle have no deflections. Okay. So if theta equals to 0, then no deflections, no deflections, that is no contributions of scattering, no contribution of scattering. Then scattering amplitude, then f of theta equals to 0, it's nothing but 1 upon k summation over L0 to infinity 12 plus 1 e to the power I delta L sin delta L P, और PL1 का वैल्यू बेसिकली 1 होता है ना? So it is equals to 1 upon k summation over L0 to infinity 12 plus 1 e to the power I delta L is nothing but cos delta L plus I sin delta L into 1 into sin delta L. So it is equals to 1 upon k summation over L0 to infinity 12 plus 1 cos delta L sin delta L plus I into 1 upon k summation over 12 plus 1 sin square delta L, sin square delta L. Okay, I into 1 by k, L equal to 12 plus 1 sin square delta L. Understand? Is it clear? Is it clear? Clear. So it's equals to, it means basically f of theta equals to 0, it's basically 1 upon k L equals to 0 to infinity 12 plus 1 sin delta L cos delta L plus I into 1 upon k summation over L0 to infinity 2L plus 1 sin square delta L. So we take imaginary part only. Take imaginary part. Take imaginary f of theta equals to 0 equals to 1 upon k summation over L0 to infinity 12 plus 1 sin square delta L. So it's nothing but we multiply with both sides 4 pi. We multiply with both sides 4 pi. Multiply 4 pi both sides
So 4 pi imaginary f of 0, 4 pi imaginary f of 0 equals to 4 pi k 4 pi k into summation over L0 to infinity 2L plus 1 sin square delta L. Let's again uh, multiply it and divide it by with k. So 4 pi k upon k square summation over L0 to infinity 12 plus 1 sin square delta L. So now it's equals to basically 4 pi k square summation over L0 to infinity 12 plus 1 sin square delta L is nothing but 4 imaginary f of 0. So left hand side is nothing but total scattering cross sections. So sigma t it's equals to 4 pi upon k imaginary f of 0. This is called why we take here only imaginary part. Okay. This is called optical theorem. Derive optical theorem. अगर देखिए सिग्मा टी का एक्सप्रेशन एफ ऑफ थीटा का एक्सप्रेशन देखिए, ठीक है, अच्छे से एफ ऑफ थीटा का एक्सप्रेशन देखिए। एफ ऑफ थीटा का एक्सप्रेशन का जो रियल पार्ट है, सो रियल पार्ट में साइन डेल्टा एल इंटू कॉस डेल्टा एल है। आपको कैलकुलेट करना है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए आपको टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना है। पीछे वाला जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस का, उसमें थोड़ा सा इस पॉइंट को देखिए, नहीं इस जगह में देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है 0 टू पाई, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है 0 टू पाई, तो साइन डेल्टा एल और कॉस डेल्टा एल का इंटीग्रेशन विथ इन द कितना होता है, कोई यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मिलेगा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू साइन डेल्टा एल, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा 0 टू पाई के रेस्पेक्ट में साइन डेल्टा एल कॉस डेल्टा एल का इंटीग्रेशन कितना होगा। जीरो, जीरो, of course zero. That's why this term will be neglect. That's why this terms will be neglect. So we get only imaginary part. Real part will be cancel out. So now the expressions become sigma t, that is total scattering cross section. In partial wave analysis, it's nothing but 4 pi by k imaginary f of 0. Okay, 4 pi k imaginary f of 0 is equal to sigma t. So please remember these expressions. 4 pi k imaginary f of 0, it's equals to sigma t, it's equals to 4 pi k square summation over L0 to infinity 12 plus 1 sin square delta L.
This is called, what is the physical significance of optical theorem? What is the physical significance of optical theorem? और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मिला इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? दिस इज ऑप्टिकल थ्योरम. Optical theory. Okay. Now, f of 0. What is the meaning of imaginary f of 0? Okay. What is the meaning of imaginary f of 0? Is it clear? इतना तक क्लियर है? मैं स्लाइड को सेव करने वाला हूं. इस एक्सप्रेशंस को यूज करके हम लोग आगे जाने वाले. सबका हो गया ना? मैं स्लाइड सेव करूंगा. और इतना तक क्लियर है? ओके, क्लियर क्लियर. सो सेव स्लाइड. अगर स्लाइड आने के बाद थोड़ा सा नॉक कर देना. यस, राइट. सो बेसिकली जो एक्सप्रेशंस मिला था उसमें एक छोटा टर्म था इमेजिनरी एफ ऑफ 0. उसका मतलब क्या है? इमेजिनरी एफ ऑफ 0, इमेजिनरी एफ ऑफ 0, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग, द पार्टिकल्स व्हिच डू नॉट गोइंग. लिखिए, पहले लिख लीजिए स्टेटमेंट को. मीन्स द पार्टिकल्स which are not going particles are not going in theta directions, in theta equals to 0 direction, is called, अच्छे से इसको समझिए. जो if imaginary f of 0 means the particles which are not going in theta equals to 0, सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है. which are not going, स्टेटमेंट थोड़ा सा मैंने गलती कर दी क्या? means the particle, हाँ okay, not going, not just going. If imaginary f of 0 means the particle which are going in theta equals to 0 directions are directions, this particle have no scattering. Particles have no scattering. तो इसका मतलब क्या हुआ? स्कैटरिंग ही नहीं हो रहा है, इसमें पार्टिकल का स्कैटरिंग ही नहीं हो रहा है. इसका मतलब दिस इक्वेशंस रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल फ्लक्स. जितना पार्टिकल इंसिडेंट हुआ, इतना सारा पार्टिकल कोलिशन करने के बाद उसी डायरेक्शन में चला गया, है ना? इसका मतलब फिजिकल मीनिंग हेडिंग डाल के लिखिए. फिजिकल मीनिंग ऑप्टिकल थ्योरम का फिजिकल मीनिंग, यहाँ पे कोई स्कैटरिंग नहीं हो रहा है ना? तो इसका मतलब दिस इक्वेशन शो दैट ऑप्टिकल थ्योरम टेल अस about the conservations of
particle flux. Okay, particle flux, that is equals to unscattered plus scattered particles equals to incident particles. Unscattered plus scattered particle is equals to incident particle का जो फ्लक्स है इक्वल होगा. क्लियर? फिजिकल मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है बेसिकली. ओके, the physical origins of this theorem is the conservation of particle flux और probability. और probability इसमें हेडिंग डाल के रखिए, probability भी लिख के रखिए, अच्छा होगा. probability ये भी दे देते, probability. So basically the beam emerging after scattering along the incident directions containing fewer particles than the incident beam. इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? The beam emerging after scattering along the incident directions along the incidence direction theta equals to 0 contains fewer than the incident beam. Incident beam. Since a number of particles have scattered in various directions. So basically small number of particles are scattered in various directions. Since a number of particles scattered in various directions. Various directions. So after the all discussions, we finally conclude one concept. One concept. Concept क्या है? Conclusions क्या है basically? Conclusion basically क्या मिल रहा है? The number of particles लिखिए अच्छे से. The number of particles removed from the incident beam
from the incident beam the number of particle removed from the incident beam along the incident directions is proportional to sigma scattering cross sections. So the number of particle removed from the incident beam along the incident direction is proportional to sigma. Okay, is clear or not? और equivalently इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं और equivalently that is important. Or equivalently the imaginary part of f of 0, right? Part of f of 0, yes or no? So this is the expression. So आपको एक स्टेटमेंट गेट के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट था इसी के ऊपर. The number of particle removed from the incident beam is nothing but in the incident direction is nothing but sigma or imaginary part of f of 0, है ना? Yes or no? Please remember these conclusions. Please remember. Or clear or not? So this is the partial wave analysis. Or using this partial wave analysis, we can calculate. We can first of all we represent the incident wave functions in terms of superposition of angular momentum state with angular momentum quantum number small l. Then we can simplify these expressions of the total wave functions psi incident plus psi scatter, and we get the scattering amplitude. The scattering amplitude only depends on theta, scattering angle theta, not phi, and the expressions is 1 upon k summation over L 0 to infinity 2L plus 1 e to the power I delta L sin delta L PL cos theta. Okay, delta L is nothing but phase shift, and its value depend on angular momentum quantum number delta L. अगर L का value 0, S wave के लिए phase shift is denoted by delta 0, और P wave के लिए phase shift is denoted by delta 1. Okay, delta 1. This is the expression is superposition form. अगर angular momentum number is 0, then we discuss the partial wave analysis. अगर L equals to 1, then we get L equals to 0, then we get S wave. अगर L equals to 1, then we get P wave analysis. अगर F L का वैल्यू 0 से लेके 1 तक रन कर रहा है, उस टाइम आपको मिलेगा S wave प्लस P wave. तो क्वेश्चंस करने के टाइम सारे कंसेप्ट आपको मिलेगा. ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर तो आपको सारे कंसेप्ट 1 by 1 फिट होने वाले हैं. ठीक है, क्लियर? इस तरह क्लियर कि ना? एनी डाउट? पार्शियल वेव एनालिसिस और स्कैटरिंग थ्योरी का सारे कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है. अब इसके बाद आप प्रॉब्लम देखिए. जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम का असाइनमेंट को ओपन कीजिए. कोई डाउट है तो बोलिए. कुछ भी डाउट है क्या? क्लियर ना? और है किसी को डाउट है? क्लियर प्रो? ओके.
Okay. So take first of all, आप क्वेश्चन नंबर ओपन कीजिए। 2017 का जो क्वेश्चन है, 2017 का जो क्वेश्चन है और 2019 में जो क्वेश्चन है, 2021 में जो क्वेश्चन है, 2022 में जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 8 से है ना, 8 से लेके डिस्कस करेंगे। 8, 9, 10, 11 और 14, 15। कल तो क्लास नहीं है ना?